आज अपन रस्ट रिमूवर बनाएंगे। रस्ट रिमूवर बनाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड, सॉल्ट, वाटर, स्लरी, SLES, कलर, एसिटिक एसिड, इतनी चीज़ों को यूज़ करेंगे। पहले अपन पानी लेंगे, इसमें अपन सॉल्ट डालेंगे, कॉमन सॉल्ट। इसको सही तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद अपन ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे। इसके बाद अपन एसिटिक एसिड डालेंगे। उसके बाद अपन डालेंगे SLES। इसके बाद डालेंगे अपन एसिड स्लरी। इसी को pH मेंटेन करना पड़ेगा, ये पूरा एसिडिक है। इसके बाद अपन डालेगा कॉस्टिक सोडा। इसका pH 6 से 7 आना चाहिए। pH मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद डालेंगे अपन कलर डालेंगे, आपकी चॉइस से आप कलर डाल सकते हैं। ये रस्ट रिमूवर है, नल को जो पानी का रस लगता है उसको सफ़ा करने में सहाय करता है, अच्छे से क्लीन होता है। इसको स्प्रे करने के बाद 12 घंटा छोड़ देने का, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।